रिलेशनशिप हमारे जीवन की एक सच्चाई, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, बट अ dimension worth looking at. You might get little scandalized with this video because I'm going to go deeper into the psychology of how we get into relationship. And so you might discover, oh my god, this is how I also did, and that was so incorrect. Anyways, would you not be interested to really figure out how do we get into relationship and what really should be the fundamentals of relationship? Because none of us wants a relationship that breaks, or a relationship that we do not enjoy, or a relationship that we find so boring and frustrating. Do you? If you also want a loving, cooperating, healthy relationship, watch this video till the end. So let's get deeper into the topic. Hi, I am Richa Sahhay, your clarity coach. So how do we get into relationships? The first level thing happens when you get into teenage and the hormone secretion starts in your body and you start to get attracted towards the opposite gender. That's where it begins actually. Unfortunately, most of us do not even recognize the hormonal work that's happening in the body. We take it as, oh, I'm falling in love. And that attraction starts to become real for us. We are not even able to treat them as attractions. और हमें लगता है कि मुझे प्यार हो गया, पहला प्यार, और वो सारे भसड़ की शुरुआत शुरू हो जाती है. आप सबसे पहले अपने माइंड को डिसअलाइन कर लेते हैं, डीरेल कर लेते हैं, ट्रैक से गड़बड़ कर देते हैं. दूसरी चीज़, आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, कोई रिलेशनशिप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर सकता है. येस, इट माइट साउंड रूड, बट दैट्स अ फैक्ट. No relationship can fulfill the expectation that you get into with. Typically speaking, आप तो जब relationship में जाते हो तो आप अपने expectations के साथ जाते भी नहीं हो. You are not even conscious of the expectations that you have. It is subconsciously operating, but it is only later that you start to discover what is happening. So that's the first thing. Very, very physical attraction that you start terming as love and attraction, and you get into relationship. The second thing, when you even get a little mature, थोड़ी बुद्धि तो आई जाती है, कॉलेज तक थोड़ी दुनिया देख ली होती है, लेकिन तब तक एक और चीज़ होती है. बॉलीवुड, हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, OTTs, ये सब हमारे भेजे पर चढ़ चुका होता है. इट स्टार्ट्स टू ओवर रूल, एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स टू ओवर रूल, तो हमारे चॉइस कैसे होते हैं? when you see at them, oh my god, what a boy, what a girl, look at her dress, look at her अदाएं, बस वहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है. अगेन वही अट्रैक्शन का किस्सा, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है और कुछ नहीं होता. अगेन यू स्टार्ट टू गेट दोज नॉनसेंस लव एट फर्स्ट साइट. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी, लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ भी नहीं होता है. तो अपने आप को ये समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई ये जो हो रहा है, दिस इज़ वेरी टेम्पररी, एंड येस आई एम इन्फैचुएटेड, मे बी मैं स्लिप कर रही हूँ, मैं स्लिप कर रहा हूँ, बट आई नीड टू लुक एट व्हाट इट इज़. एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, it start to loosen its grip on you. That's the interesting thing that happens. It starts to loosen its grip on you, and that's where you become conscious and you can hold yourself and you can really figure out, okay, do I really want to get into it or not. मैं तो इस वीडियो में आपको ये बोल ही नहीं रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में मत जाओ. कॉन्शियसली जाओ ना, पता तो हो क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले पाओगे ना, अदरवाइज़ आप ब्लेम गेम में फंसोगे. और ये मोस्ट ऑफ अस के साथ होता है, तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे, और हम इसमें फंस करके रह जाते हैं. What will we get out of blaming?
हाउ डज इट सर्व अस? ईगो मसाजिंग हो जाती है, हमारे ईगो को बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा, तुम बुरे, मैं थोड़ी बुरा. हाउ डज दैट हेल्प? डज दैट improves the quality of your life? Does that bring some wonderful things in your life? Does that make your life joyous? Does that make your life worth dancing, celebrating? नहीं, लेकिन ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये ड्रामा हम ज़रूर करते हैं. सो द सेकेंड थिंग इज़ टू रियलाइज जिस लव एट फर्स्ट साइट के नॉनसेंस से आप इस रिलेशनशिप में घुस रहे हो, दिस इज़ अ बिग मिथ. You know what sustains a relationship? The bonding. And where the bonding comes from? Habits. Do I have the understanding capability? Does my partner has the understanding capability? Are we able to tolerate each other's negative traits? हमारी हैबिट्स कैसी हैं? अगर मैं ऐसी हूँ जो सब कुछ बिखरा करके रखता है, and my partner is somebody who is very very organized, can we still be together? I might be loving non-vegetarian food and वहाँ पर vegetarian, oh my god, can I stop eating non-vegetarian food for her or for them? Or can I tolerate my partner's eating non-vegetarian food habit? How about sleeping habit? How about कहीं भी कुछ भी हम बोल देते हैं, हम सोचते नहीं. हमारा wisdom कहाँ है? वो लिटरली घुटने में चला जाता है. तो हम ना हैबिट्स को देख पाते हैं, ना हम बिहेवियर को देख पाते हैं. हमारी आंखों के ऊपर ना वो फिज़िकल रिलेशनशिप के चस्के का, सेक्स के चस्के का एक पर्दा पड़ा होता है. बड़ा रूमानी लगता है, यू नो. मैं सोच रहा हूँ एंड इट इज़ लाइक वाओ, मैं तो बादलों में हूँ, एंड ऑल दैट क्रैप हैपन्स. और कितना मज़ा आता है ना उसी समय आपको उस तरह की कुछ सॉन्ग्स दिख जाएं, all those romantic songs, and they will take you on to the even higher level of your romantic thought process. So hormonal hijacking completely हो चुकी है. You are totally hijacked by hormones and you have stopped using brain completely. Now the third aspect, expectations. You don't even realize that subconsciously you expect. This is what you have learned throughout your life. Not expecting is a great thing. Not expecting is a great thing, and we will work upon it. We must work upon it. But right now let's look at our behavior of expecting. तुमने ये नहीं किया, मैंने ये इतना किया, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है जो मैंने किया. And you don't even bother about what I need and what I do. Look at the language that we use. और अपने नहीं देख सकते हो ना, अपने फ्रेंड्स के देख लो. यही कहानी चल रही होती है, बिल्कुल यही कहानी चल रही होती है. वो मूवी आई थी ना बीच में चलते चलते, आई थिंक रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान. शुरू में रोमांस, बीच में ब्लेम गेम, हैबिट्स प्रॉब्लम्स, एंड में क्योंकि बॉलीवुड है तो स्वीट एंडिंग तो होनी है ना, तो वो स्वीट एंडिंग तो दिखाते हैं. और हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में भी बॉलीवुड ही उतर के आएगा. और हमारी ज़िंदगी का स्वीट एंडिंग कैसा होता है? स्ट्रेस, nervous breakdown, I can't tolerate you, I can't live with you, full of triggers, full of reactions. देखते ही गुस्सा आता है, खून खौल जाता है, हम पागल साड़ हो जाते, लगता है अभी मैं बंदूक उठा के गोली मार दूँ. ऐसा होता है हमारे साथ. So it is very important to understand the fundamentals of relationships. Relating is beautiful. As humans who we are, we only get to know when we know how we relate. What is the quality of my relationship? And it is not just with humans, it is even with inanimate things. How do I relate with my mobile? How do I treat this instrument? How do I take care of the house? How do I take care of anything? And then of course, people around me, friends, even those who are not probably the friends but might need my help sometime. How do I treat? Do I agree? Do I make myself available or do I run away? A lot of it comes into picture. And then comes a very very important thing, which is which center do you operate from? ये थोड़ा सा ट्रिकी है और हम इसके बारे में एक डिटेल्ड बात करेंगे किस सेंटर से हम ऑपरेट करते हैं. बट टू गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट,
There are two centers typically, the center of ego and the center of love. The center of love doesn't demand, doesn't expect, but that only happens when you first have a relationship with yourself. हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि हमारा अपने साथ कोई रिश्ता ही नहीं होता है. और टेस्ट करना चाहते हो आप, 1 घंटे अपने साथ बिना मोबाइल बिना कुछ के रह के देख लो. Just be conscious of the thoughts that bombard you here, and you will get to know. बौखला जाते हैं हम, तुरंत अपने आप को इधर उधर इंगेज करने के लिए ढूंढने लगते हैं. और ये जो खाली दिमाग शैतान का घर निकल के आया है ना, ये बिल्कुल यहीं से आया है. एक्चुअली खाली दिमाग शैतान का घर होता नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तो कभी खाली ही नहीं होता है. हमारा मन भरा हुआ होता है, और वो शैतान का घर हो जाता है बिकॉज इट प्लान्स, इट थिंक्स सो मेनी unnecessary things. It unnecessarily keeps generating, it gets into, keeps building एक के बाद एक chain of thoughts. We have no clue what is the right thinking process. So we have no clue of what love is really. And all that we know is ego, which is I need to protect myself. So you did not do this for me, I did so much for you. Expectation, it's an expression of ego. Hey, they look so nice, and the best girl of the college is my girlfriend, and the best boy is my girlfriend. और इसमें क्या होता है, ego gets amplified. So hold yourself on those games and become a little silent. Think about all that I have talked. Repeat and watch this video again. And if this is making sense and you have got any value to it, share in the comment box what you feel about it and what more would you like me to talk about, right? So see you next time once again. Bye.